प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य बर्मिंघम राष्ट्रमण्डलखेलानां भारतीयदलेन समं मेलनं करिष्यति। राष्ट्रमण्डलखेलेषु भारतेन 22 स्वर्णपदकानि समेत्य कुल 61 पदकानि विजितानि। प्रधानमंत्री उक्तवान् देशः क्रीडकानां सफलतामभिलक्ष्य गौरवान्वितः अस्ति। स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिः देशभक्तेः भावनां व्यक्तीकर्तुम् अद्यारभ्य हर घर तिरंगा इति प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजाभियानम् आरभते। अभियानस्य अन्तर्गतं समेऽपि भारतीयनागरिकाः अद्य आरभ्य 15 दिनाङ्कं यावत् निजगृहेषु त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलयन्तु इति। महार्घता प्रकरणे सामान्यजनानां चिन्तायाम् अपचितिः। जुलाई मासे प्रकीर्ण महार्घतामितिः उपचित्य 6.71% मिता। जून मासे औद्योगिकोत्पादने प्रतिशतं 12.3 मिता वृद्धिः। निगमित करसंग्रहे अपि 34 मितात्मिका वृद्धिः। भारत मलेशिया देशयोः प्रथमः द्विपक्षीय वायुसेनाभ्यासः भविष्यति। 4 दिनानि यावत् अभ्यासः प्रवर्तयिष्यते। अत्र भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स इत्यनेन सह अनुभवान् संविभाजयिष्यति। दक्षिण पूर्व यूरोपे स्थिते मोन्टेनेग्रो देशे गोलिकाप्रहारः दुरापादितः, यत्र 11 जनाः मृताः, 6 च व्रणिताः सूच्यन्ते। मोन्टेनेग्रो प्रधानमन्त्री घटनां निन्दितवान्। दिनत्रयं यावत् शोकाचारः उद्घोषितः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य स्वीये आवासे बर्मिंघम राष्ट्रमण्डलखेलेषु प्रतिभागितां विधाय प्रत्यावर्तितेन भारतीयदलेन समं मेलनं करिष्यति। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतीय क्रीडकाः 22 स्वर्णपदकानि, 16 रजतपदकानि, 23 कांस्यपदकानि समेत्य कुल 61 पदकानि विजितवन्तः। खेलेषु प्रायः 200 भारतीय क्रीडकाः 16 विभिन्नेषु खेलेषु सम्मिलितवन्तः आसन्। प्रधानमंत्री राष्ट्रमण्डलखेलावधौ क्रीडकानां मनोबलं सततं वर्धितवान्। तेषाम् उपलब्धिम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणा प्रशंसा कृता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राष्ट्रमण्डलखेलेषु सम्मिलितेन भारतीयदलेन समं मेलनं करिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट सन्देशे उक्तवान् यत् अगस्त 13 दिनाङ्के प्रातः 11 वादने स्वीयावासे ऐषमः राष्ट्रमण्डलखेलानां दलेन सह संवादार्थं समुत्सुकः अस्मि। खेलेषु भारतीयदलानां सफलतामालक्ष्य देशः गौरवान्वितः अस्ति। स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षपूर्तिः देशभक्तेः भावनां व्यक्तीकर्तुम् अद्यारभ्य हर घर तिरंगा इति प्रतिगृहं त्रिवर्णध्वजाभियानम् आरभते। अभियानस्य अन्तर्गतं समेऽपि भारतीय नागरिकाः अद्य आरभ्य 15 दिनाङ्कं यावत् निजगृहेषु त्रिवर्णध्वजम् उत्तोलयन्तु इति। भारत मलेशिया देशयोः मध्ये प्रथमः द्विपक्षीय वायुसेनाभ्यासः भविष्यति। 4 दिनानि यावत् अभ्यासः प्रवर्तयिष्यते। अत्र भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशियाई एयरफोर्स इत्यनेन सह अनुभवान् संविभाजयिष्यति। भारतीया वायुसेना Su-30 MKI C-17 इत्येतैः विमानैः सह उदारशक्तिनामके द्विपक्षीये युद्धाभ्यासे सहभागं करोति। शुक्रवासरे IIP इति औद्योगिकोत्पादनसूचकाङ्कः प्रसारितं गतः। तदनुसारि जून मासे औद्योगिकोत्पादने प्रतिशतं 12.3 मिता वृद्धिः जाता।
एकवर्षपूर्वम् 21,200तमे वर्षे जूनमासे एषा वृद्धिः प्रतिशतं 13.8 जाता आसीत्। प्राप्तविवरणस्य अनुसारि 22,200तमे वर्षे जूनमासे विनिर्माणक्षेत्रीयम् उत्पादनं प्रतिशतं 12.5 वर्धितम्। अपरतः खननोत्पादने प्रतिशतं 7.5, विद्युदुत्पादने च प्रतिशतं 16.4 वृद्धिः अभवत्। इत्थं प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य प्रथमे त्रिमासावधौ औद्योगिकोत्पादनं प्रतिशतं 12.7 वर्धितम्। जुलाई मासे देशे प्रकीर्णमहार्घतामितिः अपचीय प्रतिशतं 6.7 जाता। इतः पूर्वं जून मासे प्रकीर्णमहार्घतामितिः प्रतिशतं 7.1 आसीत्। प्रशासनेन शुक्रवासरे एतत् विवरणं प्रसारितम् आसीत्। देशे सहकारी आन्दोलनम् अभियानरूपेण प्रवर्तयितुं गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः पञ्चायत्तस्तरे सहकारी व्यवस्थां दृढयितुम् आहूतवान्। ह्यः सहकारी बैंकानां राष्ट्रिय सम्मेलनावधौ श्रीशाहः उक्तवान् यत् ग्रामान् कृषकान् च सबलीकर्तुम् एतस्याः व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं सर्वोत्तमः विकल्पः अस्ति। तेन उक्तं यत् देशे सहकारी व्यवस्थायां कृषकेभ्यः 0.1 कोटिमितात्मकं ऋणं दातुम् अपि क्षमता प्राप्स्यते। हमारा सबसे पहला काम सभी जिला सहकारी बैंक, सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का ये होना चाहिए कि हर पंचायत में पैक्स का 5 साल का एक रणनीति तैयार करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने अपने क्षेत्र के अंदर हर पंचायत में पैक्स कैसे बन सकता है इसकी 5 साल की रणनीति बनानी चाहिए। हर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने वो रणनीति का मॉनिटरिंग करना चाहिए और नाबार्ड ने भी अपनी विविध योजनाओं के साथ वो रणनीति की पुष्टि करनी चाहिए। भारत सरकार भी अनेक योजनाओं के साथ इसका समर्थन करने जाएगी। भारतवंशीयः ब्रिटिश अमेरिकीयः लेखकः सलमान रुश्दी पश्चिमेयेन न्यूयॉर्के आक्रान्तः। न्यूयॉर्के एकस्मिन् कार्यक्रमे आक्रमणकारिणा छुरिकया रुश्दी आक्रान्तः। न्यूयॉर्क रक्षिबलेन सूचितं यत् लेखकस्य स्थानीये चिकित्सालये शल्यचिकित्सा जाता। आरक्षिभिः 24-वर्षीयः आक्रमणकारी निगृहीतः अस्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः राजधान्यां दिल्ल्यां वीरगाथा प्रतियोगितायाः पुरस्कार विजेतृ वितरण समारोहे सहभागं कृतवान्। कार्यक्रमे तेन 25 विजेतारः प्रतिभागिनः सम्मानिताः। समारोहे शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः, रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्टः, वायुसेना प्रमुखः एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना प्रमुखः एडमिरल आर. हरिकुमारः अथ रक्षा सचिवः डॉक्टर अजय कुमारः उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् समारोहे सेना पब्लिक विद्यालयानां 400-अपि अधिकाः विद्यालयाः, शिक्षकाः च अन्तर्जालमाध्यमेन सहभागं कृतवन्तः। आप सब ने जो कुछ भी हमारे बहादुर जवानों के बारे में लिखा है वो आपकी एंट्रीज को मैंने जानने की कोशिश की है। ये कोई भी आपकी एंट्रीज को देखेगा तो निश्चित रूप से उसे बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा। हमारे बच्चे इतने क्रिएटिव हैं। सचमुच बच्चों में आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे मैं आपको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। क्या गजब के भाव मुझे आप लोगों की पेंटिंग, पोएम्स, ऐसे और वीडियोस में देखने को मिले। मुझे आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक की यात्रा दिखाई आपकी एंट्रीज में। इस यात्रा में कितने वीरों ने अपना सर्वस्व बलिदान देते हुए भारत मां के आन बान और शान की रक्षा की, यह दिखाई दी आप सबकी एंट्रीज में। दक्षिणपूर्वीये यूरोपे मोन्टेनेग्रो देशे भीषणगोलिकाप्रहारकाण्डे भुशुण्डीधारिणां समेत्य 11 जनाः मृत्युम् उपगताः।
अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः जाताः। आहतेषु एकः आरक्षी अपि अस्ति। प्राप्तसूचनायाः अनुसारि सेटिन् जेवास्तव्यः एकः जनः पारिवारिकविवादस्य अनन्तरं पथिकान् आलक्ष्य गोलिकावर्षणम् आरब्धवान्। मोन्टेनेग्रो प्रधानमन्त्री घटनां निन्दितवान्। देशे दिनत्रयात्मकाय शोकाय अपि घोषितवान्। देशे गतदिने सोल्लासं संस्कृतदिवसः परिपालितः। अत्रावसरे देशस्य भिन्नेषु भागेषु अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अवसरेऽस्मिन् ट्वीट् सन्देशमाध्यमेन उक्तं, गतेषु वर्षेषु युवानः संस्कृतप्रचारे अग्रेसराः सन्ति। गतवर्षे अगस्तमासीये मन की बात कार्यक्रमे अहम् एतादृशानां प्रयत्नानां प्रशंसां कृतवान्। आशासे यत् आगामिकाले अपि अस्माकं युवानः संस्कृते रुचिं दर्शयेयुः। अपरस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्री जनान् वर्धापितवान्। तेन उक्तं, विश्व संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। भारते विश्वे च संस्कृतप्रचाराय कार्यं कुर्वतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। पूर्वतने एकस्मिन् हैशटैग मन की बात कार्यक्रमे मया संस्कृतस्य महत्त्वं सौन्दर्यं च यत् उक्तं तत् अत्र प्रस्तौमि। प्रिय दर्शकाः, भवतां समेषां प्रिय साप्ताहिक संस्कृतपत्रिकायाः वार्तावल्याः अभिनवस्य अङ्कस्य प्रसारणं शनिवासरे अर्थात् अद्य सायं 6 वादने डीडी न्यूज़ वाहिन्या भविष्यति। अस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। तावत् अवलोकयन्तु। सुविरासु विदधमावदेम शिक्षायाः प्राचीनसंस्थानं श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालयः नवदिल्ल्यां विराजते। You can be successful only when you do something which you like and which you feel is important. गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी। वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रसारणं शनिवासरे सायं 6 वादने भविष्यति। पुनः प्रसारणं च रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।